जब विकास का प्रकाश पहुंचता है तो जिंदगी की हर राह नई ऊंचाइयों को छूने लग जाती है। বাটচুৰাতেই অসম দৰ্শন বুজিব পাৰিব অসমৰ বৈচিত্ৰ্যময় সমাজ সংস্কৃতি আৰু জৈৱ বৈচিত্ৰ্য। इस नए एयरपोर्ट टर्मिनल में कदम रखते ही ये साफ दिखता है विकास भी और विरासत भी ये मंत्र के मायने क्या है। প্ৰকৃতিৰ শোভা আৰু সম্পদক থিম বা মূল বিষয়বস্তুৰূপে লৈ নিৰ্মাণ কৰা দেশৰ ভিতৰতে প্ৰথমটো বিমানবন্দৰৰ ৰূপত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে মুকলি কৰিলে বৰঝাৰৰ LGBI বিমানবন্দৰৰ নতুন টাৰ্মিনেল। इस एयरपोर्ट को असम की प्रकृति और संस्कृति को ध्यान में रखकर गढ़ा गया है। टर्मिनल के अंदर हरियाली है, इंडोर फॉरेस्ट जैसी व्यवस्था है, चारों तरफ प्रकृति से जुड़ा डिजाइन है। यहाँ आने वाला हर यात्री सुकून महसूस करे। উন্মোচিত লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈৰ পূৰ্ণাবয়ব প্ৰতিমূৰ্তিও। बरदोलोई जी असम के पहले मुख्यमंत्री थे, असम का गौरव थे, असम की पहचान, असम का भविष्य और असम के हित। उन्होंने कभी भी इससे समझौता नहीं किया। आज लोकप्रिय गोपीनाथ बरदोलोई एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का उद्घाटन हमारे इस संकल्प का प्रमाण है। मैं सभी असम वासियों को, देश के लोगों को इस नई टर्मिनल बिल्डिंग के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। চকু চাট মাৰি ধৰা কাৰুকাৰ্য আৰু স্থাপত্য শিল্পৰে নিৰ্মাণ কৰা আদানী এয়াৰপোৰ্ট হোল্ডিং লিমিটেড পৰিচালিত বিমানবন্দৰটোৰ এই নতুন টাৰ্মিনেল কাৰ্যক্ষম হ'ব অহা বছৰ 19 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা। ধুনীয়া নহয়, অতিকে ধুনীয়া এই নতুন টাৰ্মিনেল ভৱনত নাই কি অসমৰ জৈৱ বৈচিত্ৰ্যৰ চানিকিৰ পৰা ছেমি কণ্ডাক্টৰ প্ৰকল্পৰ প্ৰতীকলৈ লোককৃষ্টিৰ পৰা দিনৰ ভাগত সূৰ্যৰ ৰশ্মিৰ পৰা উৎপন্ন হোৱা শক্তি সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থালৈ পৰম্পৰা আৰু প্ৰযুক্তিৰ সম্পূৰ্ণ সমাহাৰ LGBI বিমানবন্দৰৰ এই নতুন টাৰ্মিনেল ভৱনত। साथियों, आधुनिक एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं, कनेक्टिविटी का आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर ये किसी भी राज्य के लिए नई संभावनाओं और नए अवसरों के गेटवे होते हैं। ये राज्य के बढ़ते आत्मविश्वास और लोगों के भरोसे के स्तंभ होते हैं। আৰু নতুন টাৰ্মিনেল মুকলি কৰাৰ পাছতেই অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ঘোষণা, অচিৰেই 60 একৰ ভূমিক সামৰি আৰম্ভ হ'ব এৰো হাবৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য। এই টাৰ্মিনেল বিল্ডিঙৰ লগে লগে আমাৰ ইয়াতে এটা এৰো হাব 60 একৰ মাটিত নিৰ্মাণ কৰা হ'ব। হোটেল, কনভেনচন চেণ্টাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ইয়াত সংযোজন হ'ব। সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ মুখ্যমন্ত্ৰীত্বত অসমত প্ৰথমখন বিজেপি চৰকাৰৰ দিনত হোৱা প্ৰথম এডভান্টেজ অসম বিনিয়োগ সন্মিলনৰ ফচল LGBI বিমানবন্দৰৰ এই নতুন টাৰ্মিনেল। আৰু ভাষণৰ আৰম্ভণিতে সমবেত জনতালৈ মোদীৰ আহ্বান। आज का जो दिवस है विकास के उत्सव का दिवस है, पूरे नॉर्थ ईस्ट के विकास का उत्सव है। और इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि अपना मोबाइल फोन निकालिए, उस पर फ्लैश लाइट चालू कीजिए और सबके सब इस विकास उत्सव में भागीदार बनिए। हर एक के मोबाइल फोन का लाइट जलना चाहिए। देखिए तालियों की गूंज से पूरा देश देखेगा कि असम विकास का उत्सव मना रहा है। মোদীয়ে তেওঁৰ ভাষণ আৰম্ভ কৰে অসমীয়াতে। লুইট পহৰীয়া ৰাইজলৈ মোৰ শ্ৰদ্ধা আৰু মৰম যাচিছো। ইয়া বিকাশৰ নতুন অধ্যায় বুলি মন্তব্য কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ মুখত সুধাকণ্ঠৰ কথা। असम के विकास में नया अध्याय जुड़ रहा है और ऐसे में भारत रत्न भूपेन्द्र दा की पंक्तियां बहुत सटीक हो जाती है। लुइदोर पार झिलिकाई टूली बोलोई
आमी प्रतिज्ञाबद्ध आमी संकल्पबद्ध লগতে ক'লে भूपेन दा की ये पंक्तियां केवल एक गीत नहीं थी, ये असम को प्यार करने वाली हर महान आत्मा का संकल्प था। और आज ये संकल्प हमारे सामने सिद्ध हो रहा है। আৰু নতুন টাৰ্মিনেল সন্দৰ্ভত মোদীৰ বক্তব্য इस टर्मिनल पर हर साल करीब 1.25 करोड़ से ज्यादा यात्री सफर कर सकेंगे, यानी बड़ी संख्या में पर्यटक भी असम आ सकेंगे। श्रद्धालुओं के लिए मां कामाख्या के दर्शन की सुविधा भी आसान हो जाएगी। 170 মেট্ৰিক টন ভুলুকা আৰু আপতানি বাঁহ ব্যৱহাৰ কৰি নিৰ্মাণ কৰা হৈছে এই নতুন টাৰ্মিনেল। বাঁহৰ ব্যৱহাৰ আৰু উপযোগিতাৰ বিষয়ে ক'বলৈ গৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে অৱতাৰণা কৰে ইউপিএ তথা কংগ্ৰেছৰ দিনৰ বাঁহ নীতিৰ কথা। इसकी बनावट में बांस का खास इस्तेमाल किया गया है। बांस असम के जीवन का अभिन्न हिस्सा है और दिल्ली में बैठे हुए भूतकाल की सरकारों को ये बम्बू क्या है इसकी पहचान भी नहीं थी। आप हैरान होंगे, 2014 में आपने मुझे काम दिया, उसके पहले हमारे देश में एक कानून था। ये कानून ऐसा था कि आप बम्बू को काट नहीं सकते। अब कोई मुझे समझाए भाई, क्योंकि उन्होंने कह दिया बम्बू एक ट्री है, वृक्ष है, और जब एक बार वृक्ष कह दिया तो फिर सारे दरवाजे बंद हो गए। উল্লেখযোগ্য যে 1.4 লাখ বৰ্গমিটাৰ এলেকাত নিৰ্মাণ কৰা এই টাৰ্মিনেলৰ পৰা এবছৰত 1.3 কোটি বিমান যাত্ৰীয়ে ভ্ৰমণ কৰিব পাৰিব। এইদৰে বিমানবন্দৰটো অত্যাধুনিক কৰি গঢ়ি তোলাৰ প্ৰধান উদ্দেশ্য হৈছে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ দুৱাৰমুখ গুৱাহাটীক ভাইব্ৰেণ্ট উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ অংশৰূপে এভিয়েশ্যন হাবৰ ৰূপত প্ৰতিষ্ঠা কৰা। আৰু অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ঘোষণা 2028 চনত নিৰ্মাণ কৰা হ'ব লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈ আন্তৰ্জাতিক বিমানবন্দৰৰ তৃতীয়টো টাৰ্মিনেল। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট ND24। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰ।